Hello everyone, I welcome you all for the next lecture of organic evolution, and henceforward we will be seeing a series of videos in which we will be learning about the evolution of human beings, okay, or Homo sapiens. So let's begin. Now human beings or Homo sapiens belong to a group of organisms, or rather a group of mammals called as primates. Okay, we belong to a group called as primates. Primates, this word has originated from Latin word called as primate. Primate word से ये origin किया है, which basically means first rank, or which means prime. Prime means important, first rank, सबसे आगे जो आएगा. Okay, so it basically means we are the first or most important or prime kind of group of organisms. ठीक है, हम this tells about the more importance of or high evolutionary standards of human beings. Okay, the primates evolved around 85 to 55 million years ago. ठीक है, and the overall group of primates, I would say, and the first branching of that primates took place during the Paleocene period, where the first prosimians were observed. Okay, now first, after the evolution of prosimians, in Oligocene period the first monkeys were evolved, I mean. Then followed by in Miocene the apes were evolved, and finally in Pliocene the hominids were evolved. Now don't confuse between Pliocene and Paleocene. Okay, this is Pliocene and this is Paleocene. If I show you the basic cladding of the organisms, I can see this branch indicates the overall primates. Okay, these is mammalian ancestors we are talking about, primates basically. Okay, so from the primates the first branching, this branch evolved in Paleocene, where the prosimians were involved and prosimians were evolved, and examples of prosimians include the lemurs. ठीक है, lemurs दिखते हैं, lemurs साउथ अमेरिकन इसमें मिलते हैं, they are belonging to prosimians. Then next, during the Oligocene period, this evolution of monkeys took place, and they included both New World monkeys and Old World monkeys. I hope you remember the terms which we had seen in our previous video, the New World and the Old World. New World includes the North America and South America. Okay, South America and North America are included into New World, New World, whereas the rest of the world is called as Old World. So basically, actually, it's not just based on that. The type of organisms which are observed in these two continents are also different. ठीक है, Atlantic Ocean बहुत बड़ा बीच में आता है New World और Old World के बीच में. So New World, Old World is separated from one side by Atlantic Ocean, the other side Pacific and Indian Ocean. Okay, further, in Miocene you can see the apes had evolved. Apes, okay, उसमें भी Asian apes and African apes are different. Asian apes and African apes are different, and finally in Pliocene actually it comes, the hominids were involved. ठीक है, hominids में Homo genus, हमारे जो Homo genus है, Homo sapiens हम लिखते हैं ना, Homo sapiens. तो Homo sapiens का जो Homo है, this Homo genus में जितने भी और आएंगे species, they all are together called as hominids. Fine. So this is the basic evolution of human beings, how it has taken place from the primates, that I have told you a basic idea. Now before we see the actual evolution of human beings, let's see the differences which were rising between the apes and human beings. If I show you before, just the slide before, you can see the nearest organisms to the hominids are apes. ठीक है, monkeys are further, apes are more nearer to hominids than monkeys, and we'll just see what are the differences between humans and apes. The first difference is human spine exits from the center and the ape spine exits from the rear of the skull.
स्कल के जो इससे है दैट इज सेंटर से ये स्पाइन एग्जिट करती है ह्यूमन बींग्स में, वेयरएज एप्स में ये कहाँ से करती है, रियर एंड से एग्जिट करती है, सेंटर से नहीं एग्जिट करके रियर एंड से करती है. सेकेंडली द शेप ऑफ द ह्यूमन स्पाइन इज एस शेप्ड, ऐसा एस शेप्ड स्पाइन रहता है. आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. दिस हेल्प्स अस इन बैलेंसिंग आवर बॉडी वेट व्हेन वी आर बाइपेडल. दो पाँव पे जब हम खड़े रहते हैं तो ये बैलेंस करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो सी लाइक दिस लाइक दिस इट इज फाइन, एस शेप इट इज फाइन. द नेक्स्ट थिंग इज द ह्यूमन पेल्विक गर्डल इज बाउल शेप्ड. ये पेल्विक गर्डल अगर देखेंगे तो हमारा कैसे है, बाउल जैसे शेप्ड है. वेयर एज इन केस ऑफ एप्स इट इज मोर इलोंगेटेड एंड नैरो, और ये ऐसा शेप्ड है. ठीक है, नैरो हो जाता है, लॉन्गर भी है और नैरो भी है. हमारे इसमें शॉर्टर है और बाउल शेप्ड है, गोलाकार है उसको. फाइन. द ह्यूमन फीमर एंगल्स आर इनवर्ड्स एंड नीज आर ऑल्सो इनवर्डली प्लेस्ड. ये देखो पाँव के एंगल, फीमर के एंगल्स कैसे आते हैं, इनवर्डली आते हैं. वेराज इन एप्स दे आर आउटवर्ड. ह्यूमंस में कैसे हैं, इनवर्ड्स आते हैं तो हमारे दोनों घुटने जुड़ते हैं. एप्स में कैसा है, आउटवर्ड आते हैं तो दोनों घुटने सेपरेटेड रहते हैं. ठीक है. एज अ रिजल्ट द नी कैन सपोर्ट मोर वेट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एज कंपेयर टू इन केस ऑफ एप्स. ठीक है, तो हमारा सीधा इस देखो दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स द वे वी स्टैंड. ओके, वी कैन स्टैंड स्ट्रेट, वेयर अदर एप्स इफ यू सी दे विल बी स्टैंडिंग इन अ स्लाउचिंग मैनर, थोड़ा सा ऐसे झुक के खड़े रहते हैं. एंड लास्टली द फुट ऑफ आवर फुट देयर इज अ आर्च इज प्रेजेंट. हमारे पाँव का देखिए, हम लोग जब फुट इम्प्रिंट आता है, अगर गीला पाँव आप रखेंगे तो ये ऐसा फुट इम्प्रिंट आता है. ओके, यू कैन see such a foot imprint. So this depression is the arch which is present. ये जो आर्च रहता है इसके वजह से ये हमको ये हमारा फुट ऐसे दिखता है. जिनके फ्लैट फुट रहते हैं ना उनका ऐसा फुट का इम्प्रेशन आएगा. बट जनरली मेजॉरिटी दिस इज अ एनोमैली, बट नॉर्मली द फुट लुक्स लाइक दिस. किसी का भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर्च दिखता है फुट पे, नीचे में तलवे पे. फाइन. सो दिस एंड दिस टुगेदर, this actually produces or helps in causing a straight or what you call bipedal. जो हम नेचर है उसमें हम बिल्कुल सीधा जो खड़े रह सकते हैं वो इसकी वजह से खड़े रह सकते हैं. So now I have told you that the differences between humans and apes. Now you can, in the previous slide we had seen that humans and apes are having common ancestors. तो जो इवोल्यूशन हुआ उसमें हमारे एंसेस्टर में कुछ कॉमन चीज़ें हमको दिखेंगे एंड हाउ दीज कैरेक्टर्स इवॉल्व्ड इवेंचुअली, दैट वी विल बी एबल टू सी. So let's now one more thing where we have not seen the comparison of the skull and the dental formula. If we see this modern gorilla and modern human being, you can compare the skull. See, the brow ridge is very prominent in case of gorillas. That means we are talking about apes. Gorillas मतलब apes के बारे में हम बात कर रहे हैं. The brow ridge is very common. हम लोगों में brow ridge है but it is highly reduced. It is highly reduced. And the brow ridge is हाईली रिड्यूस्ड. ठीक है, ये मॉडर्न ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं. ओके, ठीक है. वेयर एज इवन द टीथ इफ यू सी, यू कैन सी द साइजेस ऑफ द कनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ठीक है, कनाइन्स हमारे पहले तो इतने बड़े है ही नहीं है. देखो यहाँ पे कनाइन कितना क्लियरली दिख रहा है, हमारा कनाइन इतना क्लियर नहीं दिखता है, या इतना शार्प या इतना बड़ा नहीं है. वेयर एज द इवन द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू दीज वंस. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन्स. Now when we have to study the human evolution, we study the human evolution using the fossil records. ठीक है, हम कैसे पढ़ते हैं, fossil records use करके पढ़ते हैं. Now the development of human species has taken around 24 million years. ठीक है, so around 24 हमको जो first fossil मिला है that is 24 million years old. ठीक है, सब इतना पुराना हमको fossil मिला है. अगो नहीं बोलेंगे, million years old बोलेंगे. मैं पूरा ही लिखती हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड. इट इज़ 24 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ओके, नाउ देख द फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमको मिला, मिला इससे पुराना अगर मिलता है तो वी विल कम टू नो कि ह्यूमन इवोल्यूशन इससे पहले भी हुआ है. फाइन. नाउ टू स्टडी द ह्यूमन इवोल्यूशन आई हैव कैटेगराइज्ड ऑल द स्पीशीज ऑफ होमो
into five different groups. Okay, first as early hominids, followed by pre-human phase, then early human phase, लेट ह्यूमन फेज एंड लास्टली द मॉडर्न ह्यूमन फेज. ऐसे 5 फेजेस में मैंने इसको कैटेगराइज किया है. आई शो यू दिस इज द फ्लो चार्ट एंड दिस इज हाउ वी विल बी स्टडिंग. Okay, so in the next video we will be studying about early hominids, followed by next further videos pre-human phase, then early human phase, late human phase, and lastly the modern human phase. इसमें different species we will be studying about. Okay, 2 to 3 species हर इसमें हैं, हम पढ़ने वाले हैं one by one in each video, and we'll start. Actually we are supposed to start with Caniapithecus, but I will first tell you about the Proconsul africanus, which is the actual common ancestor between ape and human being. Okay, so I'll stop here now for today, and next video onwards we will be studying about each group of human being, each group of the human evolution, what I have categorized. Okay, so that is all for today. If you have any doubts or queries, please feel free to contact me through WhatsApp, or you can mail me, or you can log on to my blog, or the best way is you can write down in the comment section below this video. Thank you.